Hello, good afternoon, class 6. Uh, as the schedule that on Monday we have literature, so I think that we should start literature. I think we have completed 2 chapters in literature section, and we will take 1/3 also, and then we will start, revision. So, student, in the 3rd chapter of this prime English, that is your book in class 6 the literature. The 3rd chapter is a story. Actually, this is not a story, this is an abstract that is taken from the American novelist Mark Twain. Mark Twain has written a series of novel. Into there is a novel that is called The Adventure of Huckleberry Finn, Adventure of Tom Sawyer. These are two very great, they are very great and important novel that describe the journey of a boy from different society, different kind of culture, different types of family, different types of places. He this In this book, Mark Twain has the characters there. The character are Tom Sawyer and Huckleberry Finn. So Huckleberry Finn, the Adventure of Huckleberry Finn is the preceder of this novel. That is this novel's part there is in your story class 6. The Adventure of Tom Sawyer. This story, that is the 3rd chapter in your book. The story is Whitewashing the Fence. Whitewashing the Fence. So in this story, actually, before going through the whitewashing the fence, you should know about the historical background of this Tom Sawyer. There is a character Tom Sawyer in the novel. The novel is The Adventure of Tom Sawyer, and Martin has portrayed Tom Sawyer as a vagabond boy, a boy who wanders here and there, goes to many places, does many adventurous thing in his life. That's why they are called vagabond boys. So in this story, Tom Sawyer is he lives with his auntie. मौसी के साथ रहता है Tom Sawyer, and that it was Sunday का means Sunday का दिन है, because his aunt is very strict. He is very disciplined way woman, and that's why it was Sunday, and this woman has given the task to Tom Sawyer of whitewashing the fence that is called wall. वो घर का चहर दीवारी को इन्होंने चूना करने के लिए दिया. ये स्टोरी यहीं से वाइट वॉशिंग द फेंस. When you go through the title of this book, you come to know this story revolves the activities, the functions, the tasks happening around while the boy is whitewashing the wall. So this story devolves here, and I think that I should narrate this story. Actually, when Tom Sawyer went to whitewash the fence, that is in your language wall, boundary of his aunt house. What happens, it is very large looking, means इतना बड़ा है, हम कैसे करेंगे. मौसी ने she has given buckets, she has given
ब्रश दे दी है, बकेट दे दी है, और उसके बाद इन्होंने क्या कि वाइट वॉश करने के लिए चूना दे दिया कि जाओ करो। ये जो दीवार थी दैट वाज 30 yards टू पोर एंड 9 feet हाई, 9 फीट ऊंचा दीवार थी और 30 yards, सोचिए कि लंबाई थी उसकी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर टॉम सायर टू वाइट वॉश this fence, that is the wall. So he thought that he was whitewashing. He has started whitewashing the fence, and many of his friends with them he went to field to play. He went to the jungle, he went to the mountains, rivers with his friends. So at the day was Sunday, and Tom Sawyer was given a task by his aunt to whitewashing the fence, and the fence was 30 yards long and 9 feet I think it was high. So he started, and while he was whitewashing, he was singing. When you do something, you keep singing, and you keep singing, you are very much interested because you forget everything around you what is happening. तो जब वो गा रहा था और जो है कि गाते गाते वाइट वॉशिंग कर रहा था, तो वही बिकॉज इट वॉज ऑन द रोड एंड ही वॉज वाइट वॉशिंग द वॉल. उसका एक फ्रेंड है जिम एक्चुअली जिम was crossing from there. Jim came skipping out the gate with a tin pail and singing Buffalo Girls. तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब उसको देखकर, टॉम को देखकर कि जिम हंस रहा था, एंड जिम was taking very much enjoy there, तो टॉम के अंदर एक प्रकार का a kind of hatred, a kind of jealousy comes कि देखो हम काम कर रहे हैं और ये जनाब जो है मज़ा ले रहे हैं. So he remembered that there was a company at pump, white, the motto and negro, boy and girls, they were always returning distinctly. और टॉम सोच भी रहा था कि अभी पार्टी वार्टी होने वाली है, तो कैसे हम जाएंगे वहाँ. तो उसने सोचा कि लेट अस find out any way to be escape from such kind of task of whitewashing. When he was whitewashing and he was singing, तो जैसे ही बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा का लगा का नहीं, जब वो टॉम वाइट वॉश कर रहा था और दीवार को गया वाइट वॉशिंग करते समय बोला बड़ा मज़ा रहा है, बड़ा मज़ा रहा है. ऐसा देख करके उसका जो फ्रेंड था, ये है कीम उसका फ्रेंड था, क्या किया कि he took up his brush and went to Kalikuan. उसके बाद उसके मोस्टली फ्रेंड्स वहाँ आते हैं, ऐसे ही करके क्या करते हैं, चले जाते हैं. बट एक समय ऐसा आता है when many friends comes in different way. Some friends they come in singings, कुछ लेकर आते हैं, कुछ कोई लेकर कोई एक तो he was coming there by eating an apple, सेब खाते हुए वहाँ आता है. ओके, सो अब उसके दिमाग में चलता है कि अब कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए इन सब चीज़ों से. तो टॉम सायर के दिमाग में वही बात चलती है कि क्यों ना मैं इस टास्क को एक कितना इन्जॉयमेंट बना दूं, ताकि जो लोग मेरे पास से जो मेरे दोस्त गुजर रहे हैं वो सोचे कि दे फील जेलसी बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंजॉइंग, एंड वो हमसे ले करके जो है कि ब्रश फिर वाइट वॉशिंग कर रहे हैं.
the same the same went on, समय यही सब चल रहा है, गा रहा है, टिंग टोंग कर रहा है, टिंग टोंग लिंग लोंग, ये सब गाना गाते हुए अपना काम कर रहा था। तो इस चीज़ को देखकर जो बेन है उसने क्या किया कि उसने पूछा कि टॉम विल यू प्लीज़ गिव मी दैट ब्रश टू वाइट वॉशिंग द फेंस। तो बोला यस वाई नॉट, वाई कैन आई गिव यू, बिकॉज ही थॉट दैट कि टॉम जैसे मज़ा ले रहा है, मैं भी क्यों ना मज़ा लूँ वाइट वॉशिंग करते समय। सो व्हेन टॉम ने क्या किया, तो टॉम हैज़ गिवन दिस the task of whitewashing to बेन को दे देता है। बेन कहता है कि टॉम दिस वर्क इज़ नॉट मेड फॉर यू बिकॉज यू आर वेरी गुड बॉय, आपके लिए काम नहीं है, दो हम करते हैं, ये सूट नहीं करता है। देन व्हाट हैपन, तब टॉम कहते हैं, बेन कहता है कि टॉम लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, थोड़ा हमको भी करने दो। टॉम क्या करता है, टॉम दे देता है, देने के बाद वो दोनों उससे बोलता है कि सपोज दैट ऑन टू पॉली अगर आती हैं और पूछेंगी टॉम कहाँ गया है तो मैं क्या करूँ, और टॉम काम क्यों नहीं कर रहा है तो क्या बोलोगे। तो वो बोला कि टॉम जब पूछेंगी आंटी व्हेन योर आंट विल कम, I will tell her that I have taken the brush. Tom gave up the brush to the I जो है कि I have taken the brush and I whitewashing this wall, this fence by myself, and Tom has gone for my work there. So this happens. Tom gave the brush as well as whitewashing bucket to Ben and went from there to play. अब ये टॉम क्या करते हैं कि जैसे जैसे टॉम के अदर फ्रेंड्स आते हैं, देखते हैं कि बेन क्या कर रहा है, बेन आल्सो वाइट वॉशिंग दी फेंस। दूसरे फ्रेंड्स आते हैं, बेन से बेन हमको थोड़ा दो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इन्जॉयमेंट। वैसा करते करते क्या करते हैं कि सारा मीन्स पूरी दीवार, पूरा जो फेंस होता है वो वाइट वॉश हो जाता है। और टॉम को हार्डवर्क भी नहीं करना पड़ता है, गोज टू प्ले इन द फील्ड, अदर पर्सन दे कंप्लीट इट टास्क ऑफ वाइट वॉशिंग। सो दिस स्टोरी द वाइट वॉशिंग फैन, दिस इज बेसिकली दिस इज फ्रॉम द आस्पेक्ट दैट इज the novel name is The Adventure of Tom Sawyer, that is written by written by Mark Twain, an American writer. And here American writer, he has described the sentiment, the shrewdness of a boy, that how a boy is very clever, and he has done all his work with the help of his friends only because of his intellect. So this is the story there in this 6th chapter. I think that you have also to read this story. I am sending you this video as well as I will send you the summary of this, so that next time when I send you the text, you will be able to read and understand the concept of this story.